हेलो हेलो, एम आई ऑडिबल? ठीक है, तो शायद ऑन नहीं था. लेट्स स्टार्ट विद दिस. यूपीएससी प्रीलिम्स, हाउ टू थिंक एंड स्ट्रेटेजाइज अबाउट द प्रीलिम्स 2026. तो बिफोर सबसे पहले हम क्या करेंगे? प्रीलिम्स इज नॉट ओनली अबाउट द नॉलेज बेस्ड एग्जाम. द सेकेंड वन इज you have to develop your common sense, and third one is you have to develop your logical thinking, and the fourth one is building your MCQ acumen. So in the first statement, not only a knowledge based exam, so there are a lot of things we read in complete year, फिर भी वहाँ से questions नहीं आते हैं. Am I audible? बस अरे ठीक है. तो इट्स नॉट अ नॉलेज बेस्ड एग्जाम. यहाँ पे जो भी आप पढ़ोगे ज़रूरी नहीं है कि वहाँ से क्वेश्चन आए. ठीक है. द सेकेंड वन इज बिल्ड योर कॉमन सेंस. ठीक है. अब कॉमन सेंस बिल्ड करने के लिए फॉर एग्जांपल आपको कोई भी क्वेश्चन दिया गया जो एक बेसिक कॉमन सेंस से भी सॉल्व हो सकता है. द थर्ड वन इज द लॉजिकल थिंकिंग, जो मैंने एक एग्जांपल दिया कि अगर कोई हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन है एंड अमंग द 4 ऑप्शंस, third option is discussing about the water and all other options are, वो कुछ और चीज़ों की बातें कर रहे हैं. तो based on the deriving the logic, third should be the answer. यहाँ पे हमें सिर्फ और सिर्फ logical thinking की ज़रूरत है. The third one is building your MCQ acumen. MCQ acumen कब डेवलप होता है? जब हम बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं. फॉर एग्जाम्पल 5,000 10,000 क्वेश्चंस की हमने प्रैक्टिस करी, तो उससे क्या होगा? योर लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग विल बी डेवलप्ड कि वो किस लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछ रहा है. लैंग्वेज कई बार बहुत कंफ्यूजिंग होती है. ठीक है. ट्रैप्स आपको समझ में आते हैं कि किस तरीके के ट्रैप्स वो सेट करता है. जैसे फॉर एग्जांपल ओनली कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस, तो इस तरीके के जो ट्रैप्स हैं वो आप उससे फेमिलियर हो जाते हो. द थर्ड वन इज इंट्यूटिव डेवलपमेंट, कि आपका एक इंट्यूशन भी डेवलप होता है कि कौन सा आंसर सही है या कौन से ऑप्शंस बहुत ज़्यादा ट्रिकी है या फिर वो ट्रैप है. ठीक है. इसमें कोई डाउट है एनीवन? किसी को कोई डाउट, एनी क्वेश्चन? Okay, so in order to prepare prelims, we need to strategize कि हमें उसे प्रिपेयर कैसे करना चाहिए. Let's say for example there is a desert. अब डेजर्ट में कौन अच्छे से सरवाइव कर पाता है? Is it a camel, dog or a cat? Anyone? कोई बताएगा? इसको स्क्रॉल करना. कोई बताएगा? Anyone? हेलो. कैमल. अब वो डेजर्ट में सरवाइव कैसे कर पाता है कैमल? जस्ट बिकॉज his legs are cushion based, eyelids are big that cover his eyes. उसके हम्स होते हैं that store water. So there are so many things that a camel has but dog and cat doesn't. So what are these things? This is called niche. ये इसके important unique features है. That help camel to survive in the desert, right? The same goes with the prelims also. How many subjects are coming in prelims? Let's say polity, history,
पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, फिर आता है हमारा आर्ट एंड कल्चर, साइंस एंड टेक, एनवायरमेंट, ज्योग्राफी। और कौन कौन से सब्जेक्ट हैं बताओ, कोई सब्जेक्ट आई एम मिसिंग, एनीवन? एनवायरमेंट, ज्योग्राफी, IR and mapping and locations, nine current affairs, and 10th is miscellaneous. Okay, among all these 10 subjects we have to create at least 4 subject your unique strength, or what we call say niche. Let's say a student, एक स्मार्ट स्टूडेंट है, उसे डिसाइड कर लिया कि आई एम सेलेक्टिंग द पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक and environment. These are going to be my niche subject. ठीक है? And all other subjects I am going to do in a average format. Let's say art and culture, geography, IR mapping. Average doesn't mean कि वहाँ पे हम कुछ भी नहीं पढ़ेंगे. All the basic resources we will cover. But quality, economy and S&T and the environment we will cover in a strong manner. अब इसमें हमें निश कैसे क्रिएट करना है, अब इसको हमें अपना यूनिक स्ट्रेंथ कैसे बनाना है. How to do it? So polity, economy, science and tech and environment. ये 4 सब्जेक्ट उस स्टूडेंट ने चूज किए. सर दिस इज गोइंग टू बी माय निश सब्जेक्ट्स. अब इसको स्ट्रॉन्ग कैसे करना है? सबसे पहले निश का क्राइटेरिया क्या होगा? द एक्यूरेसी शुड बी. अब हमें पता कैसे लगेगा कि वो हमारा निश है या नहीं है? एक्यूरेसी शुड बी 80 to 90%. Cover all the important resources. And the final one in, we have to practice at least 800 questions per subject. So these are the criteria that defines कि ये आपके बहुत strong areas हैं. Let's say अब इनको कैसे कवर करना है? अगर आपका कोई सब्जेक्ट निश में है या फिर आप उसे स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो, फर्स्ट यू हैव टू कवर देयर NCERTs. फर्स्ट ऑफ ऑल it should be your Bible. The second one is PYQ analysis, and that too in 360-degree format coverage. And the third one is you have to cover UPSC PYQs, UPSC CSC वाले PYQs, last 40 years, and the other UPSC exams, UPSC other exams के questions.
that you can easily download from UPSC website. Okay. So why the NCERTs are so important? Let's see one example. अब जैसे एक क्वेश्चन है, टू 2024 में क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ अ सेट ए. Consider the following pyroclastic debris, ash and dust, nitrogen and compound, sulfur compounds. How many of the above are product of the volcanic eruption? That directly comes from the chapter 3 of the NCERT of class 11. Direct question. Direct. ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. ये सारे एनसीईआरटी से आए हुए हैं. यूपीएससी 2024 क्वेश्चन नंबर 4. Which of the following are correct inference and inferences from isothermal maps in month of January? These are the options and कहाँ से आए? Direct comes from this section. Chapter 9, class 11th geography NCERT. ठीक है. So that is why these are the important sources for the UPSC prelims. एक और क्वेश्चन देखते हैं. 2024 prelims question number 9. Waterfall, region and river. It comes from this section. Class 11th NCERT, chapter 3, part 2. Next question. Region, name of the mountain range and type of mountain. Directly comes from this section. Chapter 6 NCERT, major landform the earth. Straightforward questions. ठीक है. Next. Question number 12, set A. With reference to the water vapor, which of the following statements are correct? It is a gas, the amount of which decreases with the altitude and its percentage is maximum at the pole. Directly comes from this section. Easily solved. Class 11 Geography NCERT, chapter number 7 and page number 64. So these are all the examples that shows why NCERTs are important. अब साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन देख लेते हैं. Which one of the following show a unique relationship with the insect that co-evolved with it and that is the only insect that can pollinate this tree? इस सेक्शन से ये डायरेक्ट क्वेश्चन आया. ठीक है. अगेन prelims question number 29. Consider the following: butterflies, fish, frogs. How many of them above have poisonous species among them? साफ साफ लिखा हुआ है. क्वेश्चन डायरेक्ट आया हुआ है यहाँ से. ये 12th क्लास की बायोलॉजी की एनसीईआरटी से. ठीक है. तो दैट इज वाई एनसीईआरटीज क्यों इंपॉर्टेंट है वो हमने देख लिया. दीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स फॉर creating a strong niche that subject. The second one is you have to cover the PYQs in a 360-degree coverage, in a 360-degree manner. अब वो कैसे करता है? Let's say let's take an example. ये 2022 का क्वेश्चन है and we have to cover it 360-degree manner. The question is, among the following crops, which one of the most important anthropogenic source of both methane and nitrous oxide? तो मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड का एंथ्रोपोजेनिक सोर्स कौन सा है? द फर्स्ट ऑप्शन इज कॉटन, राइस, शुगर केन, व्हीट. द आंसर इज राइस.
तो हमें ये तो पता लग गया कि आंसर राइस है, बट कल को अगर फिर से क्वेश्चन इस पे आता है, फिर से अगर यूपीएससी इस क्वेश्चन को देता है दूसरे तरीके से, तो वी हैव टू प्रिपेयर फ्रॉम दिस क्वेश्चन. फॉर एग्जाम्पल, कॉटन से कौन सी गैस निकलती है वो हमने लिख लिया, शुगर केन से कौन सी गैस निकलती है वो हमने लिख लिया, वीट से कौन सी गैस निकलती है वो हमने कवर कर लिया, सो दैट कल को अगर कोई दूसरा क्वेश्चन आता है ऑन द सेम फॉर्मेट, वी हैव टू रेडी फॉर दैट. उसके बाद अब इनका हमें सीक्वेंस भी देखना है कि कंट्रीब्यूशन क्या है, कि कंट्रीब्यूटर ऑफ द ग्रीन हाउस गैसेस. तो अगर हम देखें क्रॉप वाइज, तो सबसे ज्यादा राइस है, देन वीट एंड देन शुगर केन. एंड contribution of greenhouse gases in terms of a cattle's, the major is beef, then cow and then pork. So this we have to prepare from the PYQs, and this picture shows which source create which gases. So on the basis of this picture we can cover lot of crops and their released gases. Okay, and in that way we can cover the each PYQs in a 360-degree manner. ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं. Let's say system of rice intensification of cultivation, in which alternate wetting and drying of the rice field is practiced, result in reduced seed requirement, reduced methane production and reduced electricity consumption. So we by doing the 360-degree analysis, we have to study all the options, study all the options. फॉर एग्जाम्पल, अब देखो सिस्टम राइस इंटेंसिफिकेशन में क्या होगा, ये मेथड किस लिए है, यील्ड को हाई करने के लिए, और वाटर इसमें कम यूज होता है. एंड कंडीशंस आर हॉट, ह्यूमिड, एक्सटेंडेड, सनशाइन. इस तरीके की कंडीशंस की जरूरत होती है. लेट्स से अगर सिस्टम राइस इंटेंसिफिकेशन पे फिर से क्वेश्चन आता है, तो वी हैव टू रेडी फ्रॉम दिस एनालिसिस. अब उसके बाद रिड्यूस सीड रिक्वायरमेंट, क्यों, लेस सीड पर स्क्वायर हेक्टर, कम एरिया में, ज़्यादा एरिया में कम सीड की ज़रूरत पड़ती है. रिड्यूस मीथेन प्रोडक्शन, एंड रिड्यूस, जब सीड रिक्वायरमेंट कम होगी, मीथेन प्रोडक्शन कम होगी, तो उसको उगाने के लिए भी हमें पानी की कम ज़रूरत पड़ेगी. तो रिड्यूस इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन. तो ऑन द बेसिस ऑफ 360-degree एनालिसिस we can prepare for the future questions also. So that is why the 360-degree coverage of the PYQs are important. The third one is UPSC's PYQs of last 40 years and other exams also. अब ये other exam कौन कौन से हो सकते हैं? Let's say CAPF, CDS, Geoscientist, EPFO, APFC. तो हमें इन एग्जाम्स के क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करनी चाहिए, बिकॉज ये भी यूपीएससी के थ्रू ही बनाए जाते हैं. लैंग्वेज, ट्रैप सेटिंग ऑन द सिमिलर लाइन. तो सिमिलर लाइन पे ही वो चीज़ें होती हैं. तो इसीलिए ये इन एग्जाम्स के अगर हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें तो इट विल हेल्प अस अलॉट. अब वाई द 360-degree का वाई द यूपीएससी PYQs आर इम्पॉर्टेंट, इसका भी एक एग्जाम्पल देख लेते हैं. This question comes in 2021
क्वेश्चन नंबर 79 ऑफ सेट ए 2021 में पूछा गया है, राइट टू प्राइवेसी इज प्रोटेक्टेड अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? 15, 19, 21, 20. The same question on the same pattern. Under which of the following article of the Constitution of India has the Supreme Court India placed the right to privacy? Different year, same question. दूसरा क्वेश्चन देखते हैं. ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं. आई एम जस्ट शोइंग 1 or 2 एग्जाम्पल्स. ये 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है. Which of the following statements are correct? A bill pending in the Lok Sabha lapses on its progression. A bill pending in the Rajya Sabha which has not been passed by the Lok Sabha shall not lapse on resolution of the Lok Sabha. What are the options? 1, 2, both 1 and 2 and neither nor. The same question in a different format has been asked in 2024 prelims. With reference of the Indian Parliament, consider the following. A bill pending in the Lok Sabha lapses on its dissolution. Same चीज को ही पूछ रहे हैं. Pending in the Rajya Sabha lapses on the same चीज. So that is why the PYQs are really important. So when we are preparing for the NESH, we have to cover all these three, and we have to do lot of question practice so that we can achieve 80 to 90% of the question. Our accuracy has to be 80 to 90%. Is there any question, any doubt? Anyone? Okay. So the next question is how we are going to solve let's say for example these are the subjects: quality, economy, science and environment. And these are the other subjects: history, geography, art and culture, IR and mapping, the current affairs, miscellaneous. So these are the niche. अब क्वेश्चन आता है कि कई स्टूडेंट बोलते हैं कि सर हम निश कैसे डिसाइड करें, कैसे वो हमारे यूनिक सब्जेक्ट्स होने चाहिए जहाँ पे हमारी एक्यूरेसी 80 to 90% हो, कैसे हम वो 4 या 5 सब्जेक्ट सेलेक्ट करें. तो फर्स्ट वी हैव टू सी द इनपुट आउटपुट रेशियो, कि मैं एक सब्जेक्ट में कितना इनपुट लगाऊं कि मेरे को कितना आउटपुट मिलेगा. दैट इज टोटली बेस्ड ऑन हाउ मेनी क्वेश्चंस एंड डिफिकल्टी लेवल्स. And how much are you have to or effort you have to put in. Let's say for example the environment. हर साल एटलीस्ट 13 to 14 क्वेश्चंस आते हैं.
तो 13 इन 14 क्वेश्चन आउट मीन्स कि 25 एवरेज मार्क्स का ये सब्जेक्ट है एंड दैट यू कैन कवर इन 20 से 25 डेज में यू कैन कवर इट. So the input output ratio is really high because हमें एक लिमिटेड सिलेबस है और हमें करंट अफेयर्स प्रिपेयर करना है एंड उसमें ही हमें 13-14 क्वेश्चंस अचीवेबल है. बट when it comes to history there are lot of randomness and कई बार बहुत अनसर्टेन क्वेश्चंस आते हैं जो कि जिन्होंने एमए बीए ये सब कर रखा होता है हिस्ट्री में वो भी उसका आंसर नहीं दे पाते हैं. So that is why history in my view has a very less input output ratio. It also depends कि आपका इंटरेस्ट अगर हिस्ट्री में है, अगर आपने ग्रेजुएशन या बहुत जगह पे पढ़ रखा है पहले से, तो दैट मे बी द कंफर्टेबिलिटी ऑफ योर सब्जेक्ट. बट इनपुट आउटपुट रेशियो के हिसाब से दैट इज वेरी रिस्की. ओके, पॉलिटी इज सभी का फेवरेट सब्जेक्ट है. हर साल 14-15 क्वेश्चंस आते ही हैं, तो दैट कैन बी योर निश बिकॉज इनपुट आउटपुट रेशियो अच्छा है इसका. साइंस एंड टेक ऑल्सो. साइंस एंड टेक में जनरल क्वेश्चंस आते हैं, दैट टू फ्रॉम बायोटेक, स्पेस, न्यू टेक्नोलॉजीज. ठीक है, तो इन सब सेक्शन से ही हमारे मेजरली क्वेश्चन आते हैं एंड ऑल्सो 11 से 12 क्वेश्चंस हर साल पूछे जाते हैं. तो इनपुट आउटपुट रेशियो इज रियली हाई. तो आपको निश उस हिसाब से चूज करना चाहिए कि आपका इनपुट आउटपुट रेशियो क्या है. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अदर सब्जेक्ट्स यू कैन डू विद 60% ऑफ द एक्यूरेसी. अब देखते हैं इसका मैथमेटिक्स कि हमें निश सब्जेक्ट्स में कितना बेनिफिट होता है. लेट्स से दिस स्टूडेंट डिसाइड्स कि उसका पॉलिटी, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक, एंड इसने काफ़ी प्रैक्टिस करी है. इसने अपने इनको स्ट्रॉन्ग एरियाज बना लिया है. एंड बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, आर्ट एंड कल्चर, करंट अफेयर्स, ज्योग्राफी, IR and mapping, and miscellaneous. These are his average subject with 50 or 60% of accuracy. तो अब स्ट्रॉन्ग एरियाज से इसको क्या फायदा होगा. लेट्स से 14 क्वेश्चंस आते हैं हर साल. इकोनॉमिक्स हर साल 13 से 14 क्वेश्चंस आते हैं. गवर्नमेंट दैट टू वेयर मिनिमम 11 क्वेश्चन. साइंस एंड टेक ऑल्सो 10 क्वेश्चन 9 क्वेश्चन आते हैं. तो टोटल कितने क्वेश्चन हुए? 49 क्वेश्चन. तो एवरेज लगा लेते हैं 48 क्वेश्चन कम्स फ्रॉम दी स्ट्रॉन्ग एरियाज. So on the basis of the let's say 80% of the accuracy, 48 का 80% अराउंड होगा, let's say 37 क्वेश्चन अप्रॉक्स. 37 क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ 80% ऑफ एक्यूरेसी
वो अचीव कर रहा है। तो कितना हुआ 37, 37, 74, यानी कि 74 मार्क्स वो गेन कर रहा है ओनली ऑन द बेसिस ऑफ these 4 subjects and the cutoff is around, let's say 95 की। तो रेस्ट ऑफ द मार्क्स मैं कह रहा हूँ कि अगर वो 30 मार्क्स भी अटेन कर लेता है ऑन दीज एवरेज सब्जेक्ट्स जो कि उसने NCERTs, स्टैंडर्ड बुक्स और इन सब से प्रिपेयर करके दिया हुआ है और कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी की है, तो स्टिल वो 50-60% एक्यूरेसी से ही कैन अचीव इजीली 30 मार्क्स of the rest of cutoff. So when we prepare 4 subjects or 5 subjects in a very strong manner, और जो अदर सब्जेक्ट्स हैं अगर हम उन्हें बहुत एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ अटेंशन के साथ करते हैं तो वी कैन इजीली क्रैक द कट ऑफ। So I think this should be the one of the smart approach to prepare the prelims, so that कि हमें पता होना चाहिए कि हमें कहाँ पे ज़्यादा एफर्ट लगाना है, कहाँ से इनपुट आउटपुट रेशियो ज़्यादा आएगा एंड कहाँ पे हमें सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एफर्ट डालना है जहाँ से हमें ठीक ठाक इनपुट और आउटपुट मिल जाए। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस मैथ यू हैव टू क्रिएट योर निश एरियाज, योर स्ट्रॉन्ग एरियाज। एटलीस्ट 4 सब्जेक्ट्स ऐसे होने चाहिए जहाँ पे आप कंफर्टेबल हो, जहाँ पे आपकी एक्यूरेसी 80 से 90% हो, आपने उसको बहुत एक्स्ट्रा एफर्ट के साथ प्रिपेयर किया हो एंड अदर सब्जेक्ट्स को आप एक बेसिक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में भी प्रिपेयर कर सकते हैं। तो आई थिंक दैट अप्रोच शुड हेल्प यू टू अचीव द कट ऑफ मार्क्स इजीली, बिकॉज 80% or the 70% of the cutoff you can achieve from your niche subject, जो कि आप 80% की एक्यूरेसी के साथ भी करते हो तो भी अचीवेबल है। So is there any question, any doubt you can ask anyone? तो स्क्रॉल करना। Any question? Hello. Okay. So the next point is how we are going to prepare current affairs. हमें प्रीलिम्स के लिए करंट अफेयर्स किस तरीके से प्रिपेयर करना चाहिए? फर्स्ट इज गवर्नमेंट सोर्सेज, दैट हैज टू बी और टॉप प्रायोरिटी, लाइक PIB, any radio updates, and any standard newspaper like Hindu or Indian Express. अब करंट अफेयर्स में एक क्वेश्चन ये आता है कि हमें कितना एफर्ट डालने की जरूरत है। तो करंट अफेयर इज लाइक अ ओशियन, so much width, lot of content, infinite news। अब समझ नहीं आता है कि इन
कौन सी चीज़ को प्रिपेयर करें, कौन सी चीज़ को हम नहीं करें. सी, तो बेस्ड ऑन PYQs वी हैव टू डिसाइड कि हमें कौन सी न्यूज़ पढ़नी चाहिए. लेट्स से फॉर एग्जांपल एवरी ईयर एक स्पीशीज पे क्वेश्चन जरूर आता है, स्पीशीज और उसका कोई यूनिक रोल इन इकोसिस्टम. तो इस तरीके की जब भी न्यूज़ आए यू हैव टू नोट इट डाउन. साइंस एंड टेक में कोई न्यू टेक्नोलॉजी है या फिर इंटरनेट ऑफ थिंग डिवाइसेस हैं, IoT डिवाइसेस हैं, उनसे रिलेटेड कोई न्यूज़ आता है यू हैव टू नोट इट डाउन. तो ऑन द बेसिस ऑफ द PYQs वी हैव टू डिसाइड कि हमें कौन सी न्यूज़ पढ़नी चाहिए और कौन सी हमें नहीं पढ़नी है, या कौन सी हम स्किप कर सकते हैं. बिकॉज in order to read all the things we will lose most of the important things. तो हमें प्रायोरिटाइज करना है on the basis of PYQs. That's it. So is there any question? So this is the whole approach of the prelims, and in the next session we will cover how to do the PYQs in a 360-degree manner. Okay. So okay. Okay. Bye. Thank you everyone.